Operational time for PS3 is 124 seconds. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. Seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV-C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Due to tracking. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन Plus 20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV-C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य. Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा. तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा. Sharp Ground lid strap-on separated. दोनों स्ट्रेपॉन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है. Presently, the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन. First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है. इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है. Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है. Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है. इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है. वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है. By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track.
second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई +5 वर्तमान minutes. में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड. तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है. Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा. इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा. सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए. अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण. Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात Vehicle ही in combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है. There is a confirmation of expected performance by the PS3 stage, and currently the thrust has been cut off, but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. यह कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा. उसके पश्चात तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा. The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place, but PS4 continues to coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude. एक्सपोसेट विभिन्न खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसे समझना खगोलविदों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है. एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ेंगे. यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण, और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे. एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है. एक्सपोसेट में दो मुख्य वैज्ञानिक निदभार हैं जिनका नाम है पॉलिक्स और एक्सिस्पेक्ट. इस उपग्रह का कुल भार 469 केजी है. इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक नेतभार अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं. इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोएम 3 का नाम दिया गया है. सर्वप्रथम
पोयम PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV-C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV-C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue to burn for 247.5 seconds. Thereafter, the injection parameters of the spacecraft Exposat will be achieved. After injection of the primary satellite, PS4 has yet another milestone to accomplish. It lowers to an orbit of 350 kilometers. After Exposat injection, this orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through 2 restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the Exposat injection. Once in the new orbit, PS4 will be subjected to passivation by venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is transferred to POEM avionics. Vehicle performance normal. There are 10 payloads in POEM, 7 of which are finalized through in space. Speaking about the payloads that Plus 12 minutes. POEM carries, Radiation Shielding Experiments Module RSEM is designed by a firm called Take Me to Space for evaluation of effectiveness of tantalum coating. The second payload, Women Engineered Satellite or VSAT for solar irradiance and UV index from LBS Institute of Technology for Women. Third payload is an amateur radio satellite, BeliefSat-O from KJ Somaya Institute of Technology. Fourth payload is again a CubeSat called Green Impulse Transmitter from Inspacity Space Labs Private Limited. LEAP TD from Dhruva Space Private Limited to demonstrate subsystems for microsatellite. 2 payloads are there from Pelatrix Aerospace Private Limited, which are named Rudra 0.3 HPGP and Arca 200. 3 more payloads are from Isro. The one from Physical Research Laboratory is called the Dust Experiment. 2 more from Vikram Sarabhai Space Center. One will be called as Fuel Cell Power System and the other is Silicon Based High Energy Cells. These are the payloads from Isro. जहाँ भारत में सभी नववर्ष के स्वागत के लिए जश्न और मनोरंजन में लगे हुए थे, वहीं इसरो के वैज्ञानिक PSLV-C58 प्रमोशन की तैयारियों में जुटे हुए थे। इनकी गतिविधियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। सफल मिशन के ध्येय से सराबोर इसरो के वैज्ञानिक इस वर्ष का आरंभ खगोलीय समझ को और बढ़ाने के उद्देश्य से PSLV-C58 के प्रमोशन में कार्यरत हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 516 किलोमीटर, एक्सपोसैट की अंतक्षेपण की कक्षा 650 किलोमीटर के करीब होगी। वर्तमान में सापेक्ष गति 6.86 किलोमीटर प्रति सेकंड।
इस उपग्रह एक्सपोसेट के दो मुख्य नितभार हैं। पोलिक्स, यह 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बैंड में खगोलीय प्रेक्षणों के लिए एक एक्सरे ध्रुवणमापी है। इस नितभार को URSC और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस यंत्र में एक कॉलीमीटर, एक प्रकीर्णन और 4 एक्सरे अनुपातित काउंटर डिटेक्टर लगे हुए हैं। इस प्रकीर्णन को कम परमाणु द्रव्यमान वाले पदार्थ से बनाया गया है, जो आने वाली ध्रुवीकृत एक्सरे का विषमदैशिक थॉमस प्रकीर्णन करता है, ताकि एक समय में इस कॉलीमीटर के दृष्टि क्षेत्र को 3x3 डिग्री से सीमित किया गया है, ताकि एक समय में एक ही स्रोत उज्जवल हो सके। इस नितभार के 5 सालों के जीवन काल में 40 चमकीले खगोलीय स्रोतों का प्रेक्षण करने की अपेक्षा है। यह मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड का पहला नितभार है जो ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक और नितभार एक्सस्पेक्ट एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नितभार है जो एक्सपोसेट में जा रहा है। यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम में त्वरित समय तथा संवर्धित स्पेक्ट्रम विभेदन प्रदान करेगा। यह पॉलिक्स का डेटा को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स और प्रोफाइल में परिवर्तन, 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन की लंबी अवधि में निगरानी कर सकता है। व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। इसमें कोलीमीटर का उपयोग पृष्ठभूमि को कम करने के लिए एक्सस्पेक्ट के दृश्य क्षेत्र को कम किया गया है। एक्सस्पेक्ट विभिन्न स्रोतों जैसे एक्सरे, पल्सर, ब्लैक होल, लो मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार्स आदि खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण कर सकेगा। कोस्टिंग फेज समाप्ति की ओर। Stage engine started. There is a confirmation that the fourth stage has commenced its operation. We are plus 17 minutes. 17 minutes into the launch. Current altitude is 606 kilometers. Fourth stage performance normal. चतुर्थ चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित इंजन है, MMH और मॉन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ऐसे 2 इंजन लगे हुए हैं। वर्तमान ऊंचाई 615 किलोमीटर, सापेक्ष गति 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। चतुर्थ चरण वह अंतिम चरण है जो उपग्रह के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित करेगा। The fourth stage is based on liquid propellant. The propellant loading is 1.6 tons. The fuel is monomethyl Plus hydrazine 18 minutes. and oxidizer is mixed oxides of nitrogen. Presently, Fourth the stage tracking performance stations normal. at Brunei and Bayak are tracking the launch vehicle. चतुर्थ चरण को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यह कक्षा में कुछ दिन उसी कक्षा में रहते हुए प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जाएगा। एक्सपोसेट उपग्रह का प्रक्षेपण 650 किलोमीटर की चक्राकार कक्षा में किया जाना है। इसके पश्चात चतुर्थ चरण को बंद कर दिया जाएगा तथा कुछ समय बाद पुनः प्रज्वलित कर यान की कक्षा को कम किया जाएगा। यह 650 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की कक्षा पर लाया जाएगा तथा यहाँ ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग शुरू किया जाएगा। Fourth stage performance normal.
सभी बेसब्री से इंतजार करते हुए कक्षीय स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपोसेट को अंतक्षेपित किया जाएगा। The fourth stage of PSLV currently thrusting. Plus 20 minutes. PSLV-C58 के चतुर्थ चरण PS4 को त्रैअक्षीय स्थिर कक्षीय मंच के लिए तैयार किया गया है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 एम्पियर आवर के लिथियम आयन बैटरी को आवेशित करते हैं। इसमें नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल और टेलीकमांड कक्षीय आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे एवियोनिक्स सिस्टम भी लगे हुए हैं। यह पोयम की श्रृंखला में तृतीय प्रयोग है। We are very close to the scheduled exposat injection time. जी हाँ, लगभग कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब किसी भी क्षण एक्सपोसेट को कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। चतुर्थ चरण को निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है। Satellite injection conditions are achieved. Eagerly awaiting the next event. उचित अभिवृत्ति प्राप्त करते हुए यान तत्पश्चात एक्सपोसेट को अंतक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य के प्राप्त होने के पश्चात प्रयोगात्मक क्रिया जारी रहेगी। क्रिया जारी रहेगी। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी। सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया। But mission is continuing for PS4 orbit experiment. यह खूबसूरत पृथ्वी का नजारा। Has injected exposat primary satellite into the desired orbit. We will be continuing the operations. 2 more PS4 restarts are planned, and the POEM 3 operations will be following. Approximately, the Isro will come around 2 hours after liftoff. Thank you. अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। First day of the year, first launch mission for Isro. This success matters much more in view of the rich data that Exposat will give to the scientific community in the field of astronomy. Congratulations, Team Isro. Do stand by for the address by Secretary TOS and Chairman Isro, Sri S. Somnath. We take leave from you. Goodbye.
placed the primary satellite XPOSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From this point, the orbit of the PSLV-4 stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads. And that will take some time, and we will come back to listen to all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, the new year has begun with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Mr. Jayakumar is the mission director. Okay, sir. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of PSLV. As you all know, XPOSat is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM-3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women-engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts put in by a whole group of people from Team Isro, along with other stakeholders. This mission would not have been possible but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPRC, VSSC, IISU, LEOS, and also Isro headquarters. I would also like to thank InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM-3 and all the NGs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank Chairman Isro for the mentoring and the guidance provided, and all center directors. Specifically, I would like to thank Chairman and members of MRR, FRR, LV and ORC, Padmamar sir, Ashok sir and Shuja sir. They have taken extensive reviews, and all the DRTs for clearing the various systems, also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project team, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director Joyce Jose, all the DPDs, the other team members, and the Project Management Office who has been effectively managing the campaign activities. Finally, I thank our family members for the support they provided to make our missions successful. Wishing all of you a happy and a successful new year. Good day. Jai Hind. Now the satellite director. Good morning all. As Chairman sir announced, I am happy to announce that satellite is placed in intended orbit flawlessly, and satellite health is normal, solar panels are deployed, and battery charging already started. And this is the unique mission, XPOSat. It is a unique mission, and this is first mission worldwide to have a study of polarized X-ray sources, and the second mission for polarization. So first time we will be this mission will give the polarization aspects of high energy cosmic sources and in medium energy band, and this will study magnetic field distribution in cosmic sources, and how magnetic field means originating, and alignment of these cosmic sources like black holes, and this pulsar wind and sources, and
all these cosmic sources. So it is will be the extreme and experiment for our scientific community. Once this mission is commissioned, it will be very fruitful for scientific community worldwide. And I take this opportunity to thank Chairman Isro, Central Director URSC, all Central Directors for making this mission possible by their support and guidance. And special thanks to my former project directors, Shri Amreshwar Kenneth, Shri K. Suresh, and Shri Dr. Palani Murugan for leading this mission in different stages of realization.